children, how are you? I hope you all are having fun with English and reading new books in English. Yes, do develop the habit of reading, okay? And do develop the habit of writing also. And to avoid spelling mistakes, what do? You start practicing the important words and how to write the spellings of the important words, okay? So, before you start reading or writing or do the question answers of any chapter, always pick up the difficult words from the chapter and start writing the spellings of them. That will make you a pro in English. Okay, now let's look at this chapter. This chapter's name is To Forgive is Divine. Okay, now what does it say? It says in the prologue, no one is perfect. Okay, we do good as well as bad deeds. Good deeds fetch us rewards. Bad deeds might lead to things we may not like. That is the justice of the Lord. It takes place sooner or later. Revenge gives us only a false sense of satisfaction. Desire for revenge should never be nursed. Forgiveness is the best form of revenge. Okay? कभी कभी क्या होता है बच्चों, हमारे साथ कोई बुरा करता है तो हम क्या सोचते हैं कि लेट्स टेक अ रिवेंज. अगर उसने हमारे साथ बुरा किया है तो हम भी उसके साथ बुरा करेंगे. बट नहीं बच्चों, कभी कभी ना क्या होता है, हर टाइम हम किसी को पनिश नहीं कर सकते. वी हैव टू लर्न टू फॉरगिव ऑल्सो. कभी कभी आपको ऐसे लगता होगा कि दैट पर्सन मस्ट हैव डन दिस ऑन पर्पस विथ यू. यू मे नॉट नो द रियल रीज़न. So always talk and sort out issues. उनके साथ बात करो, sort out करो and forgive if it is possible. Okay, and it is the right way to do it. You have to forgive the person rather than doing this revenge game. Okay, now let's warm up. If someone behaves badly with you, what would you do? Would you also behave with him in the same manner? सोचो बच्चों, क्या अगर आपके साथ किसी ने बुरा किया है तो आप भी बुरा ही करोगे? क्या आप भी उसके जैसे ही हो? नहीं. We all are different, okay? We all have our own reasons why we behave. So first understand the reason and then accordingly take your action. So let's look at the teacher tip. The teacher should ask the students to share how they handle their anger. Then the teacher must tell the students disadvantages of being revengeful. ओके तो बच्चों क्या होता है, हमें गुस्सा करने से कुछ भी हासिल नहीं होता है. ओके, वी हैव टू स्टे काम एंड पॉइज्ड. ओके, उसकी वजह से क्या होता है, हमें सिचुएशन को संभालने में, समझने में आसानी हो जाती है. गुस्से में जो भी हम करते हैं इट इज़ नेवर राइट. ओके, गुस्से में जो भी डिसीजंस लेते हैं या जो भी एक्शंस लेते हैं, दे आर मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर रॉन्ग एक्शंस, रॉन्ग डिसीजंस. सो वी हैव टू बी पेशेंट. And revenge is not the solution to any issues. Okay, so now let's understand this in a better manner by reading this story. So let's read. Once upon a time, a man named Santosh lived in a village. He was a noble man. He used to pray to God every day. He helped the needy, the sick and the distressed. The whole village respected him. One evening, a man came running to him and said, "My name is Amardev and I seek your protection. I will stay here for the night. I will leave early in the morning. They say you are a kind man. I am in great need of shelter for the night." Then all of a sudden he paused. He looked shocked. ओके तो एक बार क्या होता है, संतोष नाम का एक आदमी होता है जो गांव में रहता है. काफ़ी अच्छा आदमी होता है वो, और देर रात वो भगवान से प्रे भी करता है. ओके, और जो जिनको ज़रूरत होती है, जो बीमार होते हैं, जिनको उसके हेल्प की ज़रूरत है, तो सबकी हेल्प करता है. ओके, और उसकी वजह से पूरा गांव जो है उसको काफ़ी रिस्पेक्ट करता है. ओके, दे रिस्पेक्ट हिम अ लॉट. तो एक दिन क्या होता है, एक आदमी इसके पास आता है और कहता है कि मेरा नाम अमरदेव है और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए. ओके, मैं रात को आप तुम्हारे पास रहूँगा. ओके, आई विल लीव अर्ली इन द मॉर्निंग. रात को मैं तुम्हारे साथ रहूँगा और सुबह मैं निकल जाऊँगा. ओके, तो मैंने सुना है कि तुम काफ़ी अच्छे हो और तुम मुझे एक रात के लिए तुम्हारे घर में पनाह दे सकते हो. तो कहता है ठीक है, और फिर सडनली वो रुक गया और थोड़ा शॉक हो गया. It appeared as if he had realized something very strange and drastic. Santosh asked the reason, but Amardev didn't utter a word.
जब संतोष ने देखा कि ये अचानक से रुक गया है, थोड़ा शॉक में है, तो थोड़ा स्ट्रेंजली बिहेव कर रहा है, तो उसने अचानक से चेंज देखा उनमें, तो वो सोचने लगा और उन्होंने पूछा अमरदेव जी से कि क्या हुआ. तो nevertheless, being a generous man, Santosh gave food to the stranger. He provided him with a room and a comfortable bed. When he was leaving in the morning, Santosh gave him some coins and said, "Take these, they might help you." He even gave him his horse so that he could ride away before the sun rose high. The stranger took the gold coins and held the reins of the horse. ओके फिर भी संतोष ने ज़्यादा सोचा नहीं और उसने उनकी हेल्प करी, अमरदेव जी की हेल्प की, उनको एक अच्छा सा रूम दे दिया, उनको एक कंफर्टेबल बेड दे दिया, खाना दे दिया. और जब वो सुबह निकल रहे थे तभी उनको कोई थोड़े से गोल्ड कॉइन्स दे दिए और कहा कि ये तुम्हारे हेल्प के लिए है, तुम्हें काम आ जाएंगे और तुम मेरा ना हॉर्स भी लेके जाओ तो तुम्हें आसानी हो जाएगी जाते वक्त. तो नाउ लेट्स सी हाउ मच यू फॉलोड दिस स्टोरी. फॉर दैट यू हैव टू अटेम्प्ट दिस परफॉर्मेंस ट्रैकर. ओके, यहाँ पे कोई सवाल दिए हैं, आपको उनके जवाब देने. ओके, बट अगेन ही पॉज्ड फॉर अ व्हाइल विथ टीयर्स इन हिज आईज. व्हाट मेक्स यू वीप? आस्क्ड संतोष. द स्ट्रेंजर सेड, यू डू नॉट नो दैट यू आर हेल्पिंग अमरदेव, द किलर ऑफ योर एल्डेस्ट सन. Saying so, he sobbed like a child and did not know what to do. I recognized you last night and thought of leaving, but your kindness made me feel more guilty than ever. Then he said, I can never forget the kindness and hospitality you have shown towards me. Your behavior has changed a murderer into a good man. Santosh looked at the stranger for a moment. He took out some more coins from his pocket. Giving them to Amardev, he said, Take some more coins. Now you ride away from here and never come back. I shall thus be able to shake off the feeling of revenge in me. तो जब वो निकल रहा होता है तो फिर से वो उसकी तरफ देखता है, संतोष की तरफ देखता है और रोने लग जाते हैं. तो संतोष कहते हैं कि क्या हो गया? तो वो कहते हैं कि तुम इतने अच्छे हो कि तुमने तुम्हारे जो बड़े बेटे की हत्या करने वाले हत्यारे की हेल्प की है, तुमने उसको हेल्प की है, जिसकी वजह से मुझे और गिल्टी फील हो रहा है कि इतना करने के बाद भी तुम मेरे साथ इतने अच्छे कैसे हो सकते हो. तो मैंने तो तुम्हें पहले ही पहचान लिया था और मैं सोच रहा था कि इतना अच्छा बर्ताव कैसे कोई कर सकता है. तो संतोष उसको देख के कहते हैं कि ये और गोल्ड कॉइन्स ले लो और तुम यहाँ से चले जाओ और इसके बाद कभी भी मेरे सामने मत आना, जिसकी वजह से मेरे मन में जो बदले का भावना थी वो निकल जाएगी. ओके, अमरदेव वेंट हिज वे विदाउट अ वर्ड. ही वाउड नेवर टू कमिट क्राइम अगेन. It was a supreme moment of God's justice for both. Santosh folded his hands, looked up and said, I have taken revenge on the killer of my son. The murderer has been reformed. तो वो अमरदेव जी वहाँ से निकल जाते, उनके मन में एक भावना रखे कि इसके बाद मैं कभी भी किसी की भी हत्या नहीं करूँगा. एट द सेम टाइम संतोष भगवान के फ़ोटो के नीचे बैठ के उनसे प्रार्थना करके कहते हैं कि अभी मैंने मेरा बदला ले लिया है, जिसने मेरे बच्चे की हत्या की थी उसको मैंने चेंज कर दिया है, उसको रिफॉर्म करके एक अच्छा आदमी. तो अमरदेव जी वहाँ से निकल जाते हैं और वो प्रे करते हैं, वो वाव करते, प्लेज करते कि इसके बाद में मैं कभी भी किसी की हत्या नहीं करूँगा. वैसे ही संतोष जी भी अब भगवान के सामने बैठ के प्रार्थना करते और कहते कि आज मेरा रिवेंज, मेरा बदला पूरा हो गया. मैंने एक हत्यारे को एक अच्छे इंसान में बदल दिया. ओके, सो चिल्ड्रन, देयर आर डिफरेंट वेज बाय विच यू कैन टेक अ रिवेंज. Sometimes by being nice also you can take a revenge. Okay, you have to be kind to the person and that person automatically can feel guilty and okay repent on whatever bad they have done to you or caused whatever harm they've caused to you. Okay, they will reform. Okay children, so I hope this story was equally interesting as the other stories. Now quickly learn the important words and practice the difficult words, and don't forget to do the back exercises.